Mrs. Vlog. So it's been a while, so I'm back with my cooking vlog. As you guys know, कोरोना वायरस है, हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हम लोग और आप लोग भी अवॉइड करिए बाहर का खाना, बाहर जाना. So yes, today's vlog is gonna be special. It's gonna be about something sweet, delicious, tasty and super easy. तो जैसा कि आप guys जानते हैं, मैं आती हूँ with my cooking with innovation. So आज का cooking भी होने वाला है with innovation, with a twist. And वो twist जब तक आप पूरा vlog नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा. So please watch my vlog until the end. So guys, ये डिश है बेसिकली आप कोई भी तीज त्योहार हो, आपके घर कोई आ रहा हो या फिर अक्रॉस द कॉर्नर, एज यू गाइज नो नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप ये बनाइए. पीपल दोज हु आर फास्टिंग और दोज हु आर नॉट इवन फास्टिंग, ये सबको पसंद आने वाली है. सुपर इजी है, घर के कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली डिश. और जैसा कि आप लोग अगेन जानते हैं, बाहर से हम खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो अगर आपको बाहर जैसी डिश घर में ही मिल जाए तो व्हाट एल्स यू नीड. So let's get the recipe rolling. तो पहले हम दिखाएंगे आपको सारे ingredients and then हम दिखाएंगे अपनी झटपट बनने वाली अच्छी सी dish. So let's go. So guys, for this easy recipe, the ingredients which we need, it's gonna be हमारा coconut, desiccated है ये पिसा हुआ coconut. तो it's gonna be 2 cup of coconut powder. Then थोड़ा सा और हम लेंगे to coat our laddus. फिर हम इलायची पाउडर लेंगे, वैनिला एसेंस, बादाम जो कि हमने हाफ पीस में कर दिया, आपको मैं दिखाती हूँ. ये देखिए बादाम को जिसको हमने हाफ पीस में कर लिया है. एंड द बेसिक थिंग दैट्स गोना बी कंडेंस्ड मिल्क. तो हमें पूरा एक कैन लेना है कंडेंस्ड मिल्क का. क्वांटिटी एंड विद द इंग्रेडिएंट्स आई एम गोना बी राइटिंग इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And we'll be needing a pan with hot water. So we will be basically boiling water, and let's get the recipe rolling. So these are the only ingredients we'll be needing. Yeah. So guys, first thing what we have to do is we have to take a can of condensed milk which is sealed, unopened. So isko sealed wale can ko we'll be putting it in boiling water, hot boiling water, and we will be just putting the lid. And इसको हम कर देंगे सिम पे for 2 hours. तो इसको हमें basically the twist for this laddus are that we will be making caramelized laddu. So to prepare this caramel thing, we will be putting it in hot water, boiling hot water, and हम इसको सिम कर देंगे. तो it's gonna be caramelized meanwhile. It will take 2 hours, yeah. So now our condensed milk is nicely caramelized, as you can see the color. So we'll be putting 1 cup full of caramelized condensed milk. So the ratio will be like this कि जितना आप अपना ये कोकोनट डालते हो उसका हाफ आप कंडेंस मिल्क डालेंगे. So जैसे मैंने 2 cups इसका ये डाला है तो 1 cup will be condensed milk. So basically हम इसमें ये पूरा ही डाल देंगे. So guys, 1 cup, and we will be putting all together in here. So now we will be putting 1 teaspoon of vanilla essence. इसमें, and half teaspoon we will be putting this इलायची powder. cardamom powder, half teaspoon. अच्छा सा flavor and fragrance दोनों ही देता है. So guys, then we'll be mixing it all together nicely. You can use your hands. So अच्छे से इसको mix करना है. And we have to prepare a dough. So it will be like a semi dough consistency. आप देख सकते हो. Look at these. So these are like yummy laddus जो हमारी simple recipe है, easy ingredients, घर पे मिलने वाले, and सभी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू. Please guys try at home. If you like my video, please share it with your family, friends, relatives.
and subscribe to my channel and stay tuned for more videos and enjoy your Navratri with these yummy laddus. Can't wait to have one actually. It's done. Caramelized Nariyal Laddu is ready. If you enjoyed my recipe, please hit the like button, subscribe to my channel, share it with your family and friends, and hit the bell icon below to get more updates and more of my videos. And happy Navratri. Enjoy this yummy, delicious and easy recipe at home, and yeah, I can't wait to have it. So see you guys in my next vlog, and loads of love. See you.